Welcome to the 13th lecture of Covic 6 and NRT Math series, and today we will do chord to the parabola. Actually there are three sections. One is tangent that I have done in previous two classes. One is chord, probably I will do it, and one is normal that I will done in next class, three parts. Come to the chord. There are certain results for chord. We start from result 1. Straightforward. Come to this. Equation of chord joining two parametric points T1 and T2. T1 means 81 square 281 and T2 means 82 square 282. To the parabola y square is equal to 4axis, y t1 plus t2 is equal to 2x plus 2a t1 t2. ये हमारा क्या है? Suppose this is a parabola. Or let me draw here. Suppose this is a parabola and a point P, AT1 square 281, and there is a point Q, AT2 square 282. Now what is the equation of chord? आपका रिजल्ट याद है तो ठीक है. This is the equation of chord. And if you forget, अगर आप भूल जाते हैं, then just use 2-point form. Y minus y1 means 281 is equal to y2 minus y1 means 282 minus 281 upon a x2 minus x1 at1 square x minus what? X minus you can say at1 square. Actually, this result is simplification of this. You can write using 2-point form. Let me simplify. See, this is y minus 281. If you take 2a common, this is t2 minus t1. If you take a common and factorize t2 square minus t1 square, t2 minus t1 into t2 plus t1. I hope you can do it. Now matured enough. These two cancel, a cancel. Multiply by this. Let me raise this one. Multiply by this. What? This is what? This is T2 plus T1. T2 plus T1 into y minus T2 into T1 plus 2a T1 is equal to what? You can see here, multiply by 2. 2x minus 2 at1 square. Now square सही रहने दीजिए. Multiply this by this what? 2at2 t1. Multiply this by this minus 2at1 square. 2x minus 2at1 square. These two cancel. Now you can check. This is 2x when we put this here. This. You can also note this slope is what? 2 by t1 plus t2. Note it here. Its slope is what? 2 by t1 plus t2. I have told earlier that in conic section how to recap or recall the result is important. So there is a trick from my side. How to recall this result. See the trick. This is what, let me write once more, t1 plus t2. Finally I have written this is equal to 2x plus 2a t1 t2. How to recall this? What is the trick? Result is very important. Result is very important in parabola. Trick to recall this. You can see the trick like this. You recall tangent.
दिस इज पी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। और अगर आपको ये भी नहीं याद है तो आप p इज इक्वल टू 0 रूल से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर आप इस t को रिप्लेस कीजिए t1 प्लस t2/2 से और इस t को रिप्लेस कीजिए t1 into t2 से। जो सिंपल होता है x स्क्वायर को x x1 से करेंगे और x को x प्लस x1/2 से करेंगे। मोर और लेस सिमिलर इन दैट मैनर। That too goes to right side and give the result. इसको ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टेंजेंट याद है तो ये रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। Now, before moving to next result, if you want to write, you can write. Before moving to next result, let me make one thing clear. I am not doing that. Actually, there is one more result in box. This is parabola y square is equal to 4x. If you take a y coordinate at y1, then what is this x coordinate? This is y1 square by 4a. If you take this y coordinate at y2, if y is y2, then what is x1? y2 square by 4a. This is also called another type of parametric point. When you join this point, you get one more result. One more result. This is parametric point 81 is equal to 81, 82 is equal to 82, and this is a parametric point. How we decide कैसे decide करते हैं? अगर y को y1 मान लिया तो x यहाँ से ये होगा। इसको हम यूज नहीं करेंगे। मेरी पढ़ाई की टेक्निक में ये नहीं और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बट हमने इसलिए बता दिया कि कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझेंगे अच्छा वो इसने किया है। ये भी एक पैरामीटर है y1 और पैरामीटर है y2, बट 81 is for 82 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इजी है। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट रिजल्ट, बट वन मोर रिजल्ट। ठीक है, हो सकता है बट हम इस पे नहीं आ रहे हैं। हमने आपको क्लियर कर दिया। Come to result number 2. Result number 2. Actually, all result are properties. All result are properties. Result 2. One of the type of property. If AT1 square 281 and AT2 square 282 are endpoints of a focal chord important of the parabola, लिखते चलिए मेरे साथ, of the parabola y square is equal to 4x, then T1 T2 is equal to -1. This property is very important. This is called, you can write here, this is called condition for focal chord. आप लिख लीजिए, condition for focal chord. Condition for focal chord. Proof is important of each and every property. You must go through proof. I am going through proof. I will use this figure again. This is the focal chord. Means this passes through what? This passes through SA0. आप दोबारा फिगर बनाएंगे, उसी फिगर को आप यूज नहीं करेंगे। This passes through where? This passes through focus A0. Equation of chord is as per result 1. T1 plus T2y is equal to 2x plus 2a T1 T2. Being focal chord, it passes through A0. क्योंकि अब पिछला वाला क्या था? कॉर्ड था, और इसको हमने क्या मान लिया? फोकल कॉर्ड। तो A0 से जाएगा एट A0। जब आप यहां पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 into something 0, x से जाएगा। We will put replace xy, we will put x
or we will replace x by what? A, 2a plus 2a t1 t2. Now change the sign. Minus 2a is equal to 2a t1 t2. Cancel हो गया. What is t1 t2 what? Minus 1. t1 t2 minus 1. So is the result. Very important result. Very important result. t1 t2 is equal to what? Minus 2. And there is a conclusion from this result. There is a conclusion from this result. Let me erase this one. Conclusion. You can take it as result 2a. Endpoints of a focal chord of the parabola y square is equal to 4ax can be directly taken as a t square to a t and a by t square minus 2a by t. Now, first of all, write. If you haven't write something, more pause and write. Chord में बहुत ज़्यादा question नहीं है. There is no such question as chord. Question will form when we coin or club chord and normal. But most of the result is property. This result is same as above result. How? See. How? See. I hope you have done it. What is the conclusion? Suppose you take t1 is equal to t. Then what is t2? So then what is t2? Minus 1 by t1 means minus 1 by t. Take t1 is equal to t. Then what is t2? t2 is minus 1 by t. Because what is the condition? Condition is t1 t2 is equal to what? Condition is t1 t2 is equal to minus 1. Condition is what? t1 t2 is equal to minus 1. Now, what point P becomes? This becomes a t square 2at and this becomes what? Replacing t2 by minus 1 by t, since we have considered t1 is equal to t. Being a square, this is positive, but this is what? This will be negative. So is the case. तो आपको क्या समझना है कि जब हमको पैराबोला के फोकल पॉइंट का एंड पॉइंट लेना होगा तो हम दो तरीका यूज कर सकते हैं. What will be the first method? We will take points at 81 square to 81 and 82 square to 82 and then use t1 t2 is equal to minus 1. And what will be the second one? We will straightforward directly consider the pointer this. Both are same. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते रहेंगे. ठीक है, दोनों एक ही चीज. एक बार ये माने तो t1 t2 minus 1, दूसरा बार हमने सीधा यहीं पे मान लिया. Now move to result number 3. I hope you have done it. Move to result number 3. Actually this is again property. This is again property. Tangents. Again this is again property. Tangents drawn at the end points of a focal chord of a parabola any kind meet in directrix at right angle. Meet in directrix at right angle. हालांकि हम इस प्रॉपर्टी को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए प्रूफ करेंगे, बट ये किसी भी पैराबोला के लिए सही हो जाएगा. ठीक है, बट लेट्स
So see the situation. What is the situation? In this question, in this property, we did a directrix also. So this is the directrix. X is equal to minus a. The property is that tangent drawn at this. Tangent drawn at this. The both tangents and P and Q. आप अगला नया फिगर बनाएंगे. You will make a fresh figure for every property. Meet in directrix at right angle. Theta is equal to 90 degree. What is the proof? We have done in last class that point of intersection is AT1 T2 AT1 plus T2. ये मेरे सीधा लीजिए, आप समझ रहे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यहां से जो टेंजेंट, यहां से जो रिजल्ट नंबर 6 याद कीजिए, वो कहां पे आर पे कहां पे मीट करता है, AT1 T2 and AT1 plus T2. What is T1 T2? Being focal chord, what is T1 T2? Being focal chord, T1 T2 is minus 1. So this is minus a T1 plus T2. What conclusion we get? X coordinate of R always lies on x is equal to minus a. Y may be anywhere. हम किस कंक्लूजन पे आए? जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा किस पे रहेगा? x कोऑर्डिनेट माइनस a पे रहेगा. Therefore R lies on x is equal to minus a, which is directrix. y कहीं भी जा सकता है. आप ध्यान रखें, नोट कर सकते हैं. अगर ये फोकल कॉर्ड लेंगे तो y आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा. ऑब्जेक्टिव में हमने क्वेश्चन देते हैं, अगर ये फोकल कॉर्ड इफ PQ फोकल कॉर्ड नहीं, व्हाट गलत बोला मैंने. अगर आप लैटस रेक्टम लेंगे, फोकल कॉर्ड का नहीं, गलत बोला. क्या बोला? अगर आप लैटस, फोकल कॉर्ड तो यही है, अगर आप लैटस रेक्टम लेंगे तो ये हमारा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कर देगा. बट दिस इज वन पार्ट, मीट इन डायरेक्ट्रिक्स, वन पार्ट. And at right angle, how do we find this is right angle? See, let me erase this one. Slope of tangent, recall slope of tangent from result number 2 of lecture 11, 1 by t. सब पीछे रिकॉल करते हैं. Therefore slope of PR 1 by T1, slope of QR 1 by T2. See product of slopes, MPR into MQR, 1 by T1 into 1 by T2, 1 by minus 1, T1 into T2 minus 1, again the same condition, minus 1. It means what? Product of slope is minus 1, means two lines are perpendicular to each other. आज कोई हम बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्म में फिर से दे देंगे. No. I hope you have done it. Let me erase, pause and write. Now come to result 4. Now come to result number 4. Again property. Result 4, again property. This all are property. Length of focal chord, length of a focal chord through a point AT square to AT to the parabola y square is equal to 4ax is AT plus 1 by t whole square. चलिए प्रूफ करते हैं इसको. हालांकि फिगर यही काम दिया है, तो अपने आप फिगर बना ले रहे हैं. नाउ सी दिस वन. व्हाट इज दिस? दिस इज a parabola. There is a point P, AT square 281 288 coordinate, and this is the focal chord. Focal chord passes through S is 0. We have to find length of PQ. From result 2a, see the conclusion. What will be Q?
This will be a by t square minus 2a by t. याद आया? अगर इसको t1 मानेंगे तो t2 माइनस 1 by t1 होगा उसी प्रॉपर्टी से. Now what is PQ? This is PS plus QS. और आप रिकॉल कीजिए एकदम शुरू वाले पैराबोला से एक बार फिर से. अगर ये पॉइंट पी एक्स वाई है, ये एस है, तो पी एस इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, क्योंकि पी एस और पी के बराबर होता था. आई होप आपको याद आ गया होगा लिखने के बाद, मगर में आप उसको नोट भी कर लेंगे. तो व्हाट इज पी एस? इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है? ए प्लस ए टी स्क्वायर. एंड व्हाट इज क्यू एस? क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? लेट मी राइट इन फिगर आल्सो. a plus x, this time x is a plus a by t square. Now take common. A common. A plus a is 2 plus t square plus 1 by t square. You can see what is this? You can see what is this? This is, right, I am writing above. What is this? Pause and write. Pause and write. What is this? This is a t plus 1 by t whole square. These two are called focal chord segment that I will use in next property. And this is true for only this parabola. Now, conclusion. Latus rectum is the shortest focal chord. ऐसे तो देखने में लगता ही है कि जितने भी फोकल कॉर्ड हैं उसमें latus rectum क्या होगा? सबसे छोटा होगा. Latus rectum is the shortest focal chord. How you can see? From AM greater than JM. From AM greater than equal to JM, t plus 1 by t by 2 greater than root over t into 1 by t. आप इसको सीधा भी यूज कर सकते हैं कि sum of a positive quantity and its reciprocal is what? Greater than equal to what? 2. Therefore, latus rectum, focal chord, not latus rectum. In general, focal chord is what? A t plus 1 by t whole square. This will be greater than a into 2 square. क्योंकि ये किससे बड़ा है? ये आपका बड़ा है 2 से. ओवरऑल ये किससे बड़ा होगा? 4a. So shortest focal chord is what? From where? We conclude what? चलिए अब मैं बोल देता हूँ. यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड 4a है. और 4a क्या होता है? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम. एक्चुअली इसको हमने कैसे वेरीफाई किया? इससे एम जीएम लगाकर मैंने वेरीफाई किया कि कोई भी फोकल कॉर्ड 4a के बराबर या उससे बड़ा होगा. तो इसका शॉर्टेस्ट क्या मिल गया? 4a. और 4a क्या होता है? लैटस रेक्टम होता है. That is 4a is the length of shortest focal chord which is latus rectum. फिर ये किसी पैराबोला में latus LR लिख देते हैं. Now come to result number 5. I hope you have done, you have write all this. Come to result number 5. Result number 5 is, say result 5. Say result 5. This is again property. Harmonic mean of focal chord segment of a parabola
अगेन दिस इज फॉर एनी काइंड, जो ये भी आप ध्यान नहीं रखिएगा, नोट के साथ आ जाएगा, हम लिख दे रहे हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल कॉर्ड segments. Focal chord segments of a parabola is equal to semi-latus rectum. Semi-latus rectum कहने का अर्थ है that is, लिख लीजिएगा आगे, that is 2a. अगर latus rectum 4 मान रहे तो, अगर latus rectum 4a मान रहे तो, कंप्लीट प्रूफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा प्रूफ पे आ जाते हैं। फिर यही फिगर, दिस इज द प्रूफ, सेम फिगर, रिकॉल PS and SQR, QSR, focal chord segment, focal chord segment, what is PS? ये मैंने आपको पहले बताया था, what is PS? A plus AT स्क्वायर, रिकॉल कीजिए, पिछले क्वेश्चन में यूज किया, PS is A plus X, what is QX? A plus A by T square, same figure. This is continuation of result number 4, so I am using same figure, but you will draw a new figure. What is harmonic mean? PS plus QS upon PS plus QS. Put this value and simplify. Put this value, harmonic means what? 2PS into QS. Let me PS plus QS. Now, what is value of PS? A plus AT square. What is value of QS? A plus A by T square. What is PS plus QX? A plus AT square, or you can write it direct as A bracket T plus 1 by T whole square. Now, do the simplification. You will get the result. Do the simplification. Let me do. So what is this? What is this? You can say, you can take A common from these two factors. So this is 2A into A, and this will be 1 plus T square into 1 plus 1 by T square. But here, there is a sign of addition between them. So we can take only one A common. This is what? 1 plus T square plus 1 plus 1 by T square. 1A cancel. Now multiply this. This is 2A. This is 1 plus 1 by T square plus T square, and here is the answer. T square into 1 by T square 1. See the denominator. 1 plus 1 by T square. You can cancel this issue. So I have done it for parabola y square is equal to 4x, but length is independent of axis. This will be true for any kind of parabola. These are simple property. तो एक्चुअली तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिर्फ एक ही रिजल्ट था, रिजल्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आर प्रॉपर्टीज, and that will be used widely in the question, and you must know proof of all the properties. ये इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रूफ करेंगे ना तो पीछे का बहुत सारा पॉइंट भी याद आता चला जाएगा। So मैंने आपको टेंजेंट ऑफ प्रूफ का प्रैक्टिस करने नहीं बोला था, बट मैं इसमें बोल रहा हूं कि आप प्रूफ को प्रैक्टिस में रखेंगे जहां जहां मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। Now, let me move to 3 more results, straightforward. Out of them 6, 7 are known to you. Out of these 3 results, 6 and 7 are known to you. जैसे you can say, बस हमने सर्कल को आगे बढ़ाया है। 8 will be new result, and then I will do a question on this. Now, let me read. I hope you have done it. Come to result number 6. Very simple result. Very simple result. Very simple result. Result number 6. Equation of chord of contact of tangents. Equation of chord of contact of tangents drawn from
आउटसाइड पॉइंट वो क्लियर होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। x1 y1 to the parabola s is equal to 0 is t is equal to 0. Let once see the figure and you will find that you have done in circle. Actually what happens if there is a point p x1 y1, from this point we can draw two tangents, one is this and one is this. Suppose this means t1 and this as q and r. So q and r is called what? Chord of contact of tangents. And sometimes its name is chord of contact. Of tangents नहीं लिखते हैं, ऐसा मैंने सर्कल में बोला था। और सेम इक्वेशन है टेंजेंट। I told you in circle, अगर पॉइंट पाराबोला या सर्कल या हाइपरबोला पे हो तो t is equal to 0 tangent. Otherwise what? Otherwise this is chord of contact of tangent. This is chord of contact of tangent. So is the result number 6. Let me write result number 7. Let me write result number 7. Equation of chord. Result number 6 is true for any kind of parabola. You can write I have written any kind. Result number 7. Equation of chord to the parabola 6 में लिख लेंगे any kind के लिए s is equal to 0 whose midpoint is x1 y1 will be t is equal to s1 any kind. ये अगर नोटेशन में आ गया कोई रिजल्ट जो किसी के पैराबोला के लिए सही होगा। हालांकि हम जो भी प्रूफ करते हैं वो प्रूफ हम किसके हिसाब से कर लेते हैं, हम जो भी प्रूफ करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के हिसाब से, बट कुछ चीजें हैं वो हमेशा सही होती हैं। ओके, नाउ आई होप यू हैव आल्सो रिकॉल दिस। व्हाट इज द केस? दिस इज अ पैराबोला। I am doing every figure for y square is equal to 4x. This point is what? x1 y1. So if this is pq, what is equation of pq? pq is p is equal to s1. Symbols have their usual meaning. क्या meaning था? x square को चेंज करेंगे x x1 से, y square को y y1 से, x plus x1 by 2 से, y को y plus y1 by 2 से। हालांकि यहाँ पे आपका y square is equal to 4x है। And can you prove this? Can you prove this? I am proving this. I am proving this. Because there is one more important point that will help in locus. I will prove this. Actually, you let p is equal to 81 square 281 and q is equal to 82 square 282. What is equation of PQ is today's result 1. Today's result 1. What is this? Actually, this is T1 plus T2y is equal to 2x plus 2a T1 T2. देखिए ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको आप ध्यान रखिएगा। 6 को मैंने प्रूफ नहीं किया, उसका प्रूफ भी थोड़ा सा अनयूजुअल है, but that is not needed in question. But what I am doing in this type of mathematical calculation, you will find more in locus. So I have to, so let me do this. Let me do this. Now, how we replace T1 plus T2 by this? You can say from midpoint formula, from midpoint x1 y1 is what? From midpoint x1 y1 is what? We can say from midpoint x1 y1 is a t1 square plus t2 square by 2 and 2a t1 plus t2 by 2. 2 and 2 cancel. What is t1 square plus t2 square? 2x1 by a. What is t1 plus t2? y1 by a. Actually what I am going to do,
I am just try to express this t1 plus t2 and this t1 into t2 in terms of x and y. Let me erase this one. What parabola I consider? I have considered y square is equal to 4x. हालांकि any kind ये parabola के लिए सही है, but इसका proof हम इस पे करते हैं. Now see, let me erase the result. P is equal to s1. It's very simple. You can see this is actually t1 plus t2 whole square is what? t1 square plus t2 square plus 2t1 t2. Why we do? हम ये क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ से actually इसको लाना चाह रहे हैं. ये आपका हो गया y1 square by a square. ये चीज आपका कितना हो गया? ये बराबर के साथ हो गया 2x1 by a और ये आपका हो गया 2t1 t2. यही हमको चाहिए था. 2t1 t2 कितना हो गया? y1 square by a square minus 2x1 by a. अब आप 1 से चले आइए. इसे मैंने 1 मान लिया है. 1 से आपका क्या होगा? t1 plus t2 आप क्या लिखेंगे? y1 by a into y. ये आपका 2x है और ये आप यहाँ पे a रहेगा. a के साथ क्या हो गया? y1 square by a square minus 2x1 by a. ये सब एडजस्टमेंट आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ. अब ये आपका पूरा पूरा कितना हो गया? y1 by a is equal to 2x प्लस ये आपका कितना है? y1 square by a minus 2x1. बट पूरे में से मल्टीप्लाई कर दीजिए. y1 2xa plus y1 square minus 2x1a. now result एडजस्ट कीजिए आप. y1 minus 2ax y1 square minus 2x1a और दोनों तरफ आप minus 2x1a और ऐड कीजिए. y1 minus 2a ये हो जाएगा आपका x plus x1. इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे. ये आपका हो जाएगा 4 और रिजल्ट एडजस्ट करना है x1a. ये 2x1 मैंने यहाँ लिया तो वो 2 आपका क्या हो गया? 4 हो गया. दोनों तरफ मैंने क्या किया? दोनों तरफ आप कह सकते हैं 2x1 a को आप सब्ट्रैक्ट माइनस छोड़ दीजिए. सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ से. इसमें दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया. So you can see what is this? This is your t and this is your s1. This is t, this is your s1. This is important. This is t and this is your s1. This is important. This is important. एक बार इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे आपको फायदा होगा. Now let me move to result number 8. Let me move to result number 8. Final result. Thereafter I will do a question. Result 8. What is the result? Length of chord intercepted by the line y is equal to mx plus c on the parabola y square is equal to 4axis x2 minus x1 root over 1 plus m square, where x1 y1 and x2 or x1 x, like where x1 x2 are roots of mx plus c square is equal to 4x. मैं इसे रिकमेंडिंग वही इसको हम यहाँ से यहाँ डाल के जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे उसका रूट्स है. एंड सेम विल बी ट्रू. ये आपका सही होगा एलिप्स और हाइपरबोला में भी. एलिप्स में एलिप्स से y हटाएंगे, हाइपरबोला में हाइपरबोला से y हटाएंगे. तो थोड़ा इस रिजल्ट को हम समझ लें. एक्चुअली व्हाट इज द रिजल्ट? वेरी सिंपल वन. This is a y is equal to mx plus c cuts at p x1 y1 at q x2 y2. What is pq? x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square रूट over सर्कल. ऐसा आसान नहीं है. सर्कल में ये परपेंडिकुलर होता था, काम बहुत आसान था. सेंटर से कॉर्ड पे लेंथ परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करता था, बट यहाँ पे ये नहीं होगा. अब देखिए क्या करेंगे.
x2 minus x1 square plus, actually for this y2 I can write mx2 plus c, क्योंकि x2 y2 इस पे लाई करके लिख सकते हैं, and for this y1 we can write what, mx1 plus c सेटिस्फाई करता है, होल स्क्वायर c और c कैंसिल हो गया, x2 minus x1 square you can take m square common, x2 minus x1 square root over, now you can take x2 minus x1 square root over m plus 1 square, और जब आप इसको बाहर ले लेंगे, ये पूरे रूट ओवर में है, ये किसमें है, ये पूरे रूट ओवर में है, यहाँ पे स्क्वायर है, और जब आप इसको बाहर ले लेंगे वैसा रिजल्ट आ जाएगा, मॉडुलस ले लिया पॉजिटिव साइन के लिए, जब आप इसको बाहर लेंगे रूट से बाहर आ जाएगा, नोट करके लिख लीजिए, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर हाइपरबोला एंड इलिप्सॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। फिगर में मैंने क्वेश्चन आप इधर पॉज करके लिख लीजिए, आप एक बार क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, होपफुली आपने क्वेश्चन लिख लिया है, मैं क्वेश्चन में इरेज करूंगा, दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज अ पैराबोला, y square is equal to 4x, there is a point 31, and we have to draw a chord PQ, suppose this is midpoint. What is the first line? Find the length of chord of the parabola y square is equal to 4x whose midpoint is 31. बना सकते हैं, t is equal to s1, पहला पार्ट बन जाएगा, equation of chord is t is equal to s1. What is t? t y into 1 minus 4. अब ये सब आप समझ रहे होंगे, x plus 3 by 2. And what is s1? Actually we will take s as y square minus 4x. What is s1? What is s1? s1 will be your 1 square minus 4 into 3. From here we get what? y minus 2x minus x. यहाँ से कट करेंगे 2 होगा, 2x minus 6 is equal to minus 11. So what is this? This is your what? This is your y is equal to 2x minus 5. Y is first part. Y is equal to 2x minus 5. क्वेश्चन नंबर 14 लिया, पिछले लेक्चर से आगे बढ़ाया है। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या करना है? Actually we have to find this one. ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आपके P और Q हैं। सो मूव टू सेकंड पार्ट। जस्ट डू लाइक सर्कल as in figure. Let R be HK, equation of chord of contact of tangents, PQ is, इसको मिड पॉइंट माना था तो ये था T is equal to S1, और यहां से अगर इसको देखेंगे chord of contact of tangent तो क्या होगा? T is equal to 0. For 3-1 this is T is equal to S1. For this HK this is what? T is equal to 0. You have done in circle. So this is what? Is T is equal to 0 means what? Y into K, 4x plus h by 2. All are known to you in circle. Y1 is equal to 4x plus x by x1. This is what? This is ky is equal to 2x plus 2h. Now compare 1 and 2. Comparing. We get. कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका मिल जाएगा k is equal to 1, h is equal to minus 1 by 2. आप कंपेयर तो रेशियो लेकर करते हैं, बट here 2x and 2x are equal, so ratio of this will be 1, hence k is equal to 1, k is equal to 1, 2h is equal to minus 5, h is equal to minus 5 by 2. So this is your point. Which point?
This is minus 5 by 2 1. Now there is one more part. तो दो पार्ट हमने कर लिया. तीसरे पार्ट पे आते हैं. पहला पार्ट में आपको ये निकालना था इक्वेशन, दूसरा में ये t is equal to s1. This will be same as what? Circle. ये भी आपका क्या था? Almost circle की तरह. So हमने तेजी से बता दिया. Now what is the third part? We have to find third part. Third part. We have to find area of triangle PQR. Area formed by chord and chord of contact of tangents. So let me just कुछ बात इस फिगर में हम इरेज करते हैं. आप एक नया फिगर बना लेंगे. ठीक है. What is this? What is this? What is this? Actually, what we have to do? This area is HK is what? Minus 5 by 2. It's better you make one fresh figure. Not period. And what is this? This line is 2x minus y minus 5 is equal to 0. This is from first part, this is from second part. And what is area of triangle? No, what is area of triangle? Actually, area of triangle is half into base PQ into height, perpendicular from here, arch, RF. How do we find PQ? How do we find PQ? So PQ, length of PQ is x2 minus x1 root over 1 plus m square. इस बात को समझिए. रिजल्ट नंबर 8. Where slope is 2. m इसका स्लोप है. स्लोप आपका क्या है? इसका स्लोप आपका कितना है? 2. What is x1 and x2? x1 and x2 are roots of equation obtained by, मैं थोड़ा डिटेल्स में यहाँ फिर से लिख रहा हूं, obtained by eliminating y from y square is equal to 4x and y is equal to 2x minus 5. y square 4x. ध्यान से समझेंगे. इस दोनों को एलिमिनेट करने से जो इक्वेशन बनेगा उसका रूट x1 x2 होगा. This which is it is actually you can say 2x minus 5 whole square is equal to 4x. And on simplification you will get what? 4x square, let me write it on minus 20x plus 25 minus is equal to 4x, and which is what? Which is actually 4x square minus 24x plus 25 0. Its roots are x1 x2. Roots. What are its roots? x1 x2. यही मैंने आपको समझाया था. y को एलिमिनेट कर दो x2 बनेगा. Now what do we do? x1 minus x2. कभी कभी आपके इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. सॉल्व हो गया तो ठीक है, और नहीं सॉल्व हुए तो आप ये कर लीजिएगा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये ज्यादा आसान होता है. क्वेश्चन थ्योरेटिकल हुआ तो भी काम दे देगा. सम ऑफ रूट्स इज व्हाट? minus plus 24 by 4 whole square. And what is this? This is actually your 25 by 4. On simplification this is what? 6 is 36 minus this is root over 11. This is what? This is root over 11. Now if you want to write, you can write area of triangle half into PQ into RF. I have done PQ. Now I have to do RF. I am erasing this one. I am erasing this one only. What do we do? What is PQ? PQ is x2 minus x1 root over 1 plus m square. This is what? This is root 11 into what? M square is 2. So this is m is 2. So this is root 5. Now come to what? Come to RF. What is RF? This perpendicular length. You have to use the formula ax1 plus by1 plus cy root over a square plus b square. What is this? This is your
When you put minus 5 by 2 here, 2 into minus 5 by 2 minus 1 minus 5 by root over a square plus b square 2a square plus 1 square. Let me calculate this. Minus 5 minus 5 10 minus 11 11. This is what this is. Actually 11 by root 5. Finally I am erasing this one. What is the area? Half into PQ into RF. What is PQ? What is PQ? Actually PQ is 11 root 5 and what is PQ is root 11 root 5 and what is RF? This is 11 by root 5. So what do we get? By 2. That's all about chord. Actually first is result, next 4 is property, and on final 3 t is equal to 0, t is equal to s1 and length of tangent. This one, length of chord x2 minus x1 modulus root over 1 plus m square. Among these 3 you note 2. This is the one. And the final question number 14 contains a lot of information. So must do practice of this question again. Now in next class we will do normal to a parabola. So meet in next class. Okay. Thank you.